welcome to another episode of JS Presents Diamondshala, Diamond Ki Pathshala. I'm Ekta Ahuja Singh, the creative head and co-founder here at JS Solitaire. मैं हूँ गुनप्रीत सिंह, फाउंडर JS Solitaire. और आज हम बात कर रहे हैं फ्लोरेसेंस की. A lot of talk about what is fluorescence, how does it affect the diamond, and हमने कहा let's make a separate episode covering each aspect of fluorescence which we think is important to you. We can go as technical on it as possible, but the idea of Diamondshala is to cover this journey for you and to make it as simple as possible and as accessible as possible for you. So let's start with simply what is fluorescence? ये fluorescence होता क्या है? So, fluorescence is basically, the ultraviolet light जो एक होती है. So, 90% of the diamonds have fluorescence in it. But इसको कुछ टाइम के बाद एक ग्रेडिंग स्केल में उन्होंने बोला कि anything that reflects under a 60 UV light is what we will then give it on a paper which is a certificate that this has fluorescence. but देखा जाए तो आप समझ लीजिए 80% of the diamond would possess fluorescence by nature. Wow, so that means that only almost every diamond, or let's say 80% of the diamonds have fluorescence. But when we talk about that certificate, because to put it under a parameter कि हम उसको grade कैसे करें, उन्होंने एक 60 UV light का parameter बनाया, and after which they graded it as fluorescence. So parameters जो है, अगर आप देखेंगे तो एक clarity का भी जो parameter है, वो आप एक लेंस के अंदर आप सर्टिफिकेट में पढ़ेंगे तो सिर्फ 10x लेंस के अंदर पैरामीटर दिया जाता है. सो कई बार अगर आप ये सोचेंगे कि हर एक चीज का एक पैरामीटर है, कटिंग का भी एक पैरामीटर है. अगर आप ये सोचेंगे कि आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और एक इतनी सी इंक्लूजन इतनी बड़ी दिखेगी, तो उसको आपने ग्रेडिंग कैसे दी. सो हर चीज का एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि फ्लोरेसेंस भी एग्जैक्टली उसी तरह है. स्टोन में ऐसा नहीं इंक्लूजन नहीं है, 10x में वो नहीं दिखती. सो फ्लोरेसेंस में भी 60 यूवी लाइट के अंडर वो दिखती है, उससे अंडर में वो अगर उसके अंडर दिखती है तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, और अगर उसके अंडर नहीं दिखती हम उसको फ्लोरेसेंस नहीं कहते. इनफैक्ट आप 10 या 20 यूवी लाइट के अंडर देखेंगे तो बहुत में फ्लोरेसेंस आपको दिखेगी. Wow, so how does this fluorescence affect the color of a diamond? Okay, so this is a very interesting topic, I would say, because a lot of people have this doubt that how the fluorescence would look or would go by the color of the diamond. So, a lot of these diamonds, so I must tell you that, again, fluorescence is also natural. So, ये natural है. So, हो सकता है we also find yellow color of fluorescence. We might find blue, which is most common, blue color fluorescence. We might find green color fluorescence. Oh. So interestingly, पहले इसको मार्केट करके बेचा जाता था. But I must tell you, places like Taiwan, Korea, and all these places, in fact, they are sold at a premium prices, which is much more than what they are sold in India. Now, why is it? It's extremely interesting. So what happens is, a strong fluorescence diamond will reflect a blue light under UV light, right? Now, अगर वो blue पड़ता है, so जब आप एक clubbing जाते हैं or you go to a desk, what are the lights that are there? Are the UV lights? Yeah, of course. So what happens is if you make a necklace of a strong blue or medium blue fluorescence, so your necklace in a club would shine blue. Now that makes it very interesting, and that's how they market it in Taiwan and Korea and these places. So it's not necessary, it might be bad for your diamond, but it's just the way everything boils down, और हर चीज एक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाती है. सो अगेन उसकी ये देखा गया कि रेयरिटी कितनी है. अब लगा फ्लोरेसेंस तो बहुत कॉमन है, सो उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग इफेक्ट आना शुरू हो गया. बट अगर आप कहे कि इज इट बैड फॉर द कलर ऑफ द डायमंड, आई वोंट से इट्स बैड फॉर द कलर ऑफ द डायमंड. इनफैक्ट लोअर कलर्स में उसका फेसअप ज्यादा अच्छा लगता है. Now sometimes what happens is absolutely strong blue might give you a kind of a milky effect, but not with every strong blue. Few of the strong blues also give you a milky effect.
सो वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ब्लू नहीं होते, वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ब्लू होते हैं. सो इसमें भी अगर आप देखें पैरामीटर है, लाइक एसआई का एक पैरामीटर है, फ्लोरेसेंस का भी एक पैरामीटर है. सो उसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लू होता है, तो तब वो थोड़ा सा उसकी जो लाइट है वो रुकती है. अदर देन दैट, लॉट ऑफ टाइम्स द फ्लोरेसेंस is not bad for the diamond, but of course it does affect the pricing of a diamond. So does that mean that जितनी डायमंड में फ्लोरेसेंस है उतनी प्राइस डायमंड की कम होएगी? So absolutely, but coming to your question, फ्लोरेसेंस हमारे पास आता है जैसे एक फेंट होता है, एक स्लाइट होता है, एक मीडियम होता है, एक ब्लू होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्लू होता है. नाउ उसको ब्लू इसलिए बोला गया क्योंकि वो मोस्ट कॉमन था, बट अगर उसमें ग्रीन होता है तो लिखा होता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन या स्ट्रॉन्ग येलो या स्ट्रॉन्ग कोई और जो भी कलर होता है. सो ये एक सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है. नाउ एज द स्ट्रॉन्ग, the more the fluorescence, the lesser the price becomes. There's no denying to that fact because pricing की एक effectiveness होती है, but the most commonly used are from none to very slight. Medium और strong की market थोड़ी अलग हो जाती है. Got it. So you also know, viewers, that if you've got stones with fluorescence, you know which part of the world to go into, and we're going to go in a nightclub and wear those diamonds and have them shining blue. So that's a very cool and very interesting fact. Another thing I want to ask you, Gunpreet, that of course we have a very common conception, especially here in India, which says that fluorescence is bad for the diamond. And you also said that sometimes in colored diamonds, it is actually good for the diamond. Can you throw some light and explain to the viewer how this really works? So how does it work is because it will give you a bluishness which is related towards a slight bit of whiteness. So the color of the whiteness is more in a kind of a blue, kind of a shine. So face up जो होता है वो अगर आप KLM color में देखेंगे तो जितनी yellowness है वो थोड़ी सी because of the fluorescence being blue, आप समझो उसमें bluishness हो गई, so थोड़ा सा white की तरफ चले जाता है. Saying that, बहुत लोग fluorescence को कहते हैं बुरा है या अच्छा है, but actually अगर आप इंटरेस्टिंगली अपना जो नेकलेस सेट है या डायमंड रिंग्स है उसको कभी फ्लोरेसेंस लाइट के अंदर डालेंगे तो बहुत डायमंड्स आपके ऑलरेडी फ्लोरेसेंस वाले होंगे उसके अंदर. सो छोटे डायमंड्स में क्योंकि हम उसको प्राइसिंग ऐसे फ्लोरेसेंस से स्पेसिफाई नहीं करते. अगर फ्लोरेसेंस से स्पेसिफाई आप करना चाहो तो वो एक टोटल अलग कैटेगरी बन जाती है. बट अगर आप छोटे डायमंड्स में, कोई भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप इन छोटे डायमंड्स में फ्लोरेसेंस कितना है. So fluorescence makes it look nicer in lower colors. In whiter colors, sometimes it does stop the light, and it does stop the light in the lower colors also if it's extremely blue. मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि fluorescence से milkishness आ जाती है. Right. So what you're saying is that when it's from faint and very slight fluorescence, then in lower colors sometimes the face up appears whiter. Even medium. Even medium. Even strong sometimes would make it look nicer. But see, the thing is, हमें इससे फर्क कहाँ पड़ना चाहिए कि प्राइसिंग पे. करेक्ट. ठीक है, अब आप अगर वाइटर डायमंड्स ले रहे हैं तो उसमें भी अगेन प्राइसिंग पे इफेक्ट आता है. नाउ अब इससे डायमंड को कितना इफेक्ट होता है वो आप फिजिकली फ्लोरोसेंस में देखे बगैर नहीं बता सकते. राइट. सो इट्स ऑब्वियसली समथिंग व्हिच यू हैव टू सी इन फिजिकली इन अ स्टोन. एंड of course, like you've been grading for so many years, so you are able to understand this concept. And it's very interesting to note कि जो हम existing diamonds भी पहन रहे हैं, existing jewelry भी हमारे पास है, अगर हम उसको भी वो light के अंदर देखेंगे, so it will still reflect blue, but it is just this man-made parameter जिसकी वजह से वो एक पेपर पे आई या नहीं आई, उससे प्राइस को कितना इफेक्ट हुआ. Absolutely, and I think which is also right because you got to give a structure to a market also. Correct, absolutely. So इसमें क्या होता है, अपने SI1 दिया है, SI2 दिया है, 10x अंडर, सो हर एक चीज के पैरामीटर कहीं ना कहीं तो उसको हमको ड्रॉ करना ही पड़ता है. सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. Great. So that's very, very interesting on fluorescence, and we learned a couple of new things as far as fluorescence is not really bad. We have to look at this the solitaire to see how it is. मिल्की लग रहा है या उसका कलर वो बेटर कर रहा है, और of course which part of the world you are in, so that of course really affects the
Fluorescence, and that is it from us for today. If you like this content, then please share, like, and subscribe to our channel Diamondshala, Diamond Ki Pathshala. This is about you, about taking your questions and explaining it in the simplest possible manner, because when you see it online, so much of the content has no authenticity to it. And that's why we decided to do this for you, to take your questions up. So if there's anything that you want to ask, shoot those questions and show some love. I'm Ekta Ahuja Singh, the creative head and co-founder here at JS Solitaire, signing off for today. मैं हूँ गुनप्रीत सिंह, फाउंडर जेएस सॉलिटेयर। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम ट्रांसपेरेंसी से एक इन्फॉर्मेशन दे और कम्युनिकेट करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और अगेन सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।